Right at the moment with us, the man himself, Mr. Ram Jethmalani. Jethmalani साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप कि आप यहाँ पर आए. Thank you so much, sir. My pleasure. Jawhrani साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए. But first, before we begin, and this is for our audience, this is for our viewers. Before we begin, I really must tell you this. Mr. Ram Jethmalani has become a grandfather today, all over again. Our dear friend Mahesh Jethmalani and his wife Hasina have been blessed with 2 boys, twins, 2 boys. मतलब भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और वो भी नवरात्र के पहले दिन. Amazing. The blessings of the mother are upon you, sir. Thank you. What does it feel like being grandfather of 2? Well, I'm already a great grandfather. Yes. So I mean, it feels great anyway. But so you feel younger. I mean, from a great grandfather now you become a grandfather. Just kidding. Just kidding. So what did you feel like doing the first time that you heard that, you know, Tony's got 2 boys? Well, I heard long ago, nearly 9 months ago, that she was carrying triplets. So what happened? Well, the doctor said that she's so frail that she won't be able to take the triplets. So I don't know what they did, but ultimately it became twins. Ultimately it became twins, right. So I'm very happy that the kids are doing fine, the mother is doing fine. And Tony possibly will start losing a little bit of weight and a little bit more hair when he has to carry them around. Well, he has to carry them around. he has also to earn for them. That is the typical Mr. Jethmalani talking. Right, thank you very much for saying that, and congratulations once again. Congratulations once again. Right, in case you want to congratulate Mr. Ram Jethmalani, he's just become a grandfather all over again. Mahesh Jethmalani has had 2 sons, and remember, you heard it right here first. सबसे पहले आपने सुना ये यहीं RKB show में सहारा समय के. Thanks to Mr. Jawhrani over here. In case you want to congratulate Mr. Ram Jethmalani, please do send in your congratulations on 9090. आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप मुबारकबाद भेजें राम जेठमलानी साहब के लिए. और अगर आप हमें विदेश में देख रहे हैं, in case you're watching us abroad, please do send your emails. I'm afraid you won't be able to send in SMSs, but you will be able to send us emails on rkb@saharasamay.com. That's rkb@saharasamay.com. Still with us, Mr. Ram Jethmalani himself. जेठमलानी साहब, इसके पहले कि हम ग्लोबल सिंधी काउंसिल के बारे में बात करें, एक और चीज़, इसके बारे में पहले भी यहाँ पे बात हो चुकी है. जब आप यहाँ लास्ट टाइम आए थे तब भी आपने बात करी थी इस चीज़ के बारे में. एक बार फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू द ग्लोबल सिंधी काउंसिल. और वो बात है दाऊद इब्राहिम की. दाऊद इब्राहिम ने आपको कांटेक्ट किया, आपने शरद पवार जी को बताया, और उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ. क्या आप ये समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम को हमें यहाँ बुलाना चाहिए था? बिल्कुल. अगर आप कहते हैं, ये तोहमत है उसके ऊपर कि तुम बड़े में बड़ा मुजरिम हो और प्राइम अक्यूज हो, और प्राइम अक्यूज को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, कहाँ से भी नहीं उसको पाते हैं जी. और वो खुद कहता है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मेरे ऊपर मारपीट मत करो. बेशक मुझको हाउस अरेस्ट में रखो, मगर जामिन पे रहूंगा मैं. मुकदमा चले, अगर मैं सजायाब हो गया तो मैं सजा भोग लूंगा जी. ये तो करना चाहिए कि इनको कबूल करना चाहिए. तो बेवकूफ़ी का काम किया है इन्होंने. So in your opinion, we should have called Dawood Ibrahim? Of course. If you were serious that he is guilty. That's right. But now the court has ruled that he is guilty. The court can rule anything in absence of somebody. तो उसमें तो कोई फायदा नहीं. क्योंकि अभी मैं आपको ये बताऊं सर, क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे. कुछ ही दिन पहले हमारे साथ CBI के फॉर्मर डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब थे. उनसे हमने ये कहा कि जहां आप अबू सालिम को लाने के लिए इतनी कंडीशंस मानने को तैयार थे, आपने वही कंडीशंस मानी है. आपने ये कहा है कि आप उनको सजाए मौत नहीं देंगे, मृत्युदंड आप उनको नहीं देंगे, उसके अलावा वगैरह वगैरह, आप इंटरोगेशन उनका नहीं करेंगे, 3rd डिग्री उनके ऊपर यूज नहीं करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सब कंडीशंस आप दाऊद इब्राहिम के केस में मानने को तैयार क्यों नहीं थे? तो उनका ये कहना था कि भारत सरकार बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की कोई कंडीशन नहीं मानी. After all, he's the man who is responsible for so many deaths, so many murders, so many this, that, all that. ऐसा उन्होंने बोला. This is nonsense. बिल्कुल nonsense है. But ultimately, you have to find a person guilty by judicial process. It's all right. You can go on making allegations against the person. He will also raise his thumbs against you and say, "You go to hell." So, in other words, we would have been much better off with Dawood Ibrahim right over here standing trial. At the moment, we've got nothing. Absolutely. ये तो common sense की बात है. इसमें कोई बहस हो ही नहीं सकता है.
If you can't get somebody by your own power, then you must have him on any terms that he dictates to you, except that he didn't say that you let me go. That's right, he didn't say that. What He he said, I am "Try me." prepared to face your trial. Ji. If I am guilty, I will be punished. Durust baat hai. If he was found guilty, you could have sentenced him to death. Ji. Wonderful. Now, you're getting a lot of congratulatory messages from all over the place on your becoming a grandfather. But at the same time, while still on the subject of Mr. Dawood Ibrahim and other people like him, I'm so sorry I'm calling him Mr. Dawood Ibrahim. I know a lot of people get very irritated when I say things like that. But do remember, he has been found guilty only now. That's what people say. But when we still don't know that yet. And he has not stood trial, first of all. Trial in absentia is really no trial, isn't that right? Of course not. Of course not. It's no trial at all. अभी तक जो बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रायल हुआ है, अभी तक 13 बरस के बाद अब जाकर के नतीजा आना शुरू हुआ है, आप क्या संतुष्ट हैं उससे कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली? मैं बिल्कुल नहीं। मैं ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें 100 अक्यूज बना के रखे हो, दीज आर ट्रायल्स व्हिच आर एसेंशियली अनफेयर एंड अनजस्ट। एक तो पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस का पूरा मकसद है, वो मकसद खत्म हो जाता है। क्रिमिनल जस्टिस शुड बी श्योर एंड स्विफ्ट जी, नहीं तो उसका कोई मकसद नहीं है। कोई पागल हो जाता है जेल में, कोई मर जाता है, कोई गवाह मर जाता है, कभी जज मर जाता है जज ट्रांसफर हो जाता है जी। तो ये 13 बरस के बाद फैसला हुआ। ऐसा ही वाकयात अमेरिका में हुई थी। हाँ, उसका ट्रायल खत्म हुआ, उसकी अपील खत्म हुई, सजा हो गई, उसको सजा भोग लिया उन्होंने सजा अपनी, और हम अभी तक जजमेंट नहीं दे पाए हैं। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील बाकी है। अब ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये पूरा रिकॉर्ड पता नहीं कितना टाइम उधर चलेगा। और हमारे बड़े में बड़े जजेस दुनिया के, उन्होंने ये कंडेम किया है, ये प्रोसीजर ऑफ दी लॉन्ग कंस्पिरेसी ट्रायल्स व्हिच गो ऑन फॉर सो लॉन्ग। Now I remember Mahesh had come over here, Mahesh Jethmalani had come over here, and both you and he had suggested that they should be broken up into 3 parts, and that would have been the logical thing to do. You break up the main accused, examine the main witnesses, और अभी मेन अक्यूज के साथ जिन्होंने ये बॉम्ब प्लांट किया, उसके साथ एक रेडी वाला जिसने इनोसेंटली माल उठाया था, जो मालूम भी नहीं था गार्डी क्या होता, तो उसको भी आपने उसमें लगा दिया। और 125 अक्यूज और 125 वकीलों के लिए आपके पास कोर्ट हाउस नहीं। तो 13 बरस के बाद क्या ये मजाक। We had Mr. M.N. Singh, former Commissioner of Police and Joint Commissioner of Crime at the time when the bomb blast took place. वो यहीं बैठे थे और उनसे हमने यही बात कही कि भाई ऐसा सजेशन आया था। He said, I don't want to go into that because there was a different motivation for why this suggestion was made. But what is the bloody motivation? What? You ask him the next question. That's exactly what he said. That's exactly what we asked him. He said, I don't want to go into that. Good. Naturally. There was a different intention. That's how you stonewall into fair inquiry. But that's sad, isn't it? It's very, sad. Very sad. Very sad. Now, Ram, coming back to the other thing, I mean, of course... See, they want to have a talking point. Every case that takes place, या तो दाऊद है उसमें, या तो ISI है। या दाऊद है या ISI है। एक जमाने में ऐसा होता था कि हर चीज में फॉरेन हैंड हुआ करता था, आजकल उसमें दाऊद और ISI। Right, now what you think about the matter, please do send in your SMSs. We have Mr. Ram Jethmalani right here with us. आपको क्या लगता है कि दाऊद इब्राहिम ने जो हमें ऑफर दिया था, क्या हम लोगों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में आप जरूर लिखें। यू नो द SMS ऑफ दिस शो विच इज़ 9090। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने SMS भेजें। जौहरानी साहब, अब आप बताएं, जहाँ तक ग्लोबल सिंधी काउंसिल का प्रश्न है जी, ये आइडिया कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आया? पहले सिंधी कांग्रेस तो है ही, सिंधी कॉन्फ्रेंस पहले है ही, हर साल करते ही संस्थाएं तो ऑर्गेनाइजेशंस तो काफ़ी है, मगर ये लास्ट दिसंबर में जी हमने 12th इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन सहयोग फाउंडेशन के अंदर किया था, और वहाँ पे पूरे दुनिया के जो सिंधीस यहाँ पे पहुँचे थे, उनकी ये आइडिया थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी। बट व्हाई काउंसिल? काउंसिल की क्या आवश्यकता पड़ गई? सभी सिंधियों को एक साथ मिलके, और सब जो भी प्रॉब्लम्स है सिंधी कम्युनिटी के। काउंसिल मतलब एक कोई भी नाम दो उसको, काउंसिल मतलब पार्लियामेंट, एसोसिएशन को, ग्रुप को, कुछ भी को, एनी वर्ड विल डू, बट काउंसिल इज अ वेरी स्नैपी टर्म, यू नो।
लेकिन जेठमलानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछली दफे जब हम लोग यहाँ पर मिले थे उस वक्त उल्लासनगर का मसला बड़ा जोरों पर था, बहुत गर्म था, और उसके बाद आप ही ने अमेंडमेंट सजेस्ट करी और आप ही ने कहा कि भाई ऐसे ही आप रेजोल्यूशन लेकर के आए, एक नया एक GR निकालें या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालें जिसके तहत ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और वास्तविकता में सॉल्व हुई। We must congratulate you on that. We must congratulate the government also. They showed a lot of courage. They became reasonable. हाँ, और हाईकोर्ट को भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट इसके ऊपर शायद गुस्से हो सकती थी, मगर उसने गुस्सा कोई प्रकट नहीं किया, जैसा कि दिल्ली में कर रही है। हाँ, जैसा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो दिल्ली का जो मसला है, बात है कि कौन करता है, कोई शरीफ इंसान करता है या तो दिल्ली का जो मसला है, हाँ, वो उससे आप वाकिफ हैं ही कि भाई 20-30 साल से जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट चल रही हैं, मतलब दुकानें चल रही हैं लोगों की, तो मिक्स्ड लैंड यूज को लेकर के वहाँ पे तकलीफ हो रही है बड़ी। तो वहाँ आप क्या सलाह देंगे? मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था जी, ये मेरे पास सवाल आया था उन दिनों में, क्योंकि ये व्हाइट हाउस जो है उधर हमारे सुप्रीम कोर्ट के नजदीक, उसका डिमोलिश किया था इन्होंने। जी जी। और कोर्ट ने कहा था कि आप वसूल करो अपना नुकसान जो हुआ है वो बिल्डर्स से, जिन्होंने आपके साथ 420 किया। तो मेरे पास जब भी वो मामला आया तो मैंने कहा कि बिल्डर्स को तो छोड़ो, बिल्डर्स तो भाग गए, पता नहीं है कहाँ वो, मगर ये जो सरकारी नौकर हैं जिनके एसोसिएशन और उनके कोऑपरेशन और करप्ट कोऑपरेशन के बगैर ये बिल्डिंग बन नहीं सकती, उनके लिए तो म्यूनसिपैलिटी जिम्मेवार है। तो हमारा तो कानून का बड़ा एक फेमिलियर प्रिंसिपल है, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फ्रॉड्स ऑफ हिज सर्वेंट। Why is not the municipal corporation responsible for these corrupt officers who allowed these whole entire buildings to go up? So I said you must first pay damages to those people from the corporation funds and then demolish them. तो हमने तो भेज दिया कैबिनेट को, कैबिनेट ने तो फिर होता ही नहीं है ना कुछ इंसाफ की बात। लेकिन जेठमलानी साहब, अभी आप दिल्ली सरकार को, दिल्ली प्रशासन को क्या सलाह देंगे? वो बार बार नोटिफिकेशन लाते हैं, रेजोल्यूशन लाते हैं, पार्लियामेंट तक में रेजोल्यूशन आया और सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगा करके वापस भगा देता है। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको, सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है कि बहुत तनाव, बहुत गर्मी हो गई है और कुछ 2-3-4 लोग मर गए, 4 लोग मर गए जी। और मगर जो मरे हैं वो मरना नहीं चाहिए था, पुलिस कुछ रिस्ट्रेन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया था। दे अटैक द पुलिस व्हीकल्स को अटैक करना जी, उसमें 40 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। ये बराबर, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट भी अभी थोड़ी नरम हो गई, उन्होंने कहा है कि आप अच्छी तरह से इसको प्लान बनाओ। यू शुड नॉट इशू दीज नोटिफिकेशंस टू ओनली सेव योर फेवरेट्स, कोई जनरल प्रिंसिपल होना चाहिए जी। सो अगर प्रिंसिपल निकालेंगी सरकार भी, ग्रुप बनाया है मिनिस्टर्स की, पता नहीं क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली। बट इजंट इट वेरी सैड मिस्टर जेठमलानी, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये बड़ी उदासीनता की बड़ी एक मिसाल है कि मुंबई में भी जैसे उल्लासनगर में हुआ, दिल्ली में जैसे मिक्स्ड लैंड यूज को लेकर के इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो व्हाई डू वी वेट फॉर दीज प्रॉब्लम्स टू बॉयल ओवर? जब तक के इतनी वाहियात चीज नहीं हो जाती तब तक हम लोग जागते क्यों नहीं? देखो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि वी आर 47th इन दी लिस्ट ऑफ करप्ट कंट्रीज जी। so 46 कंट्रीज आर बिफोर अस। सो ये एक करप्शन का मिसाल है, बड़े में बड़ा मिसाल है। करप्शन के बगैर ये कुछ हो नहीं सकता काम। जो बनाते हैं वो भी करप्ट हैं, जो बनाना देते हैं वो भी करप्ट हैं, वो भी पैसा बनाते हैं। आखिर सफरर वो है जो गरीब जाके पैसा दे के खरीद करता। तो ये करप्शन का जो बड़ा मामला है, इसको तो रोकना कुछ खास मेहनत करनी पड़ेगी ईश्वर के साथ जी। नाउ कमिंग बैक टू द ग्लोबल सिटी काउंसिल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, राम जौहरानी साहब हमारे साथ ही थे, आप भी हमारे साथ थे। उस वक्त उल्लासनगर का जब मसला चल रहा था मुंबई में, उल्लासनगर में एक बार फिर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें 95% सिंधी हैं। उस वक्त कई बड़ी बड़ी सिंधी फैमिलीज ऐसी थी जो सामने नहीं आई मदद करने के लिए। दे डिडंट कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैड डिफरेंट प्रायोरिटीज, यू नो। वो कोई उन्होंने बात तक नहीं करी इसके बारे में। कुछ कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? देखो, सब इंसान एक कैरेक्टर के हो नहीं सकते,
और दुनिया में उनकी खामियों को याद करने से कोई फायदा नहीं, उस खामियों को भूलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो आगे क्या करते हैं। अभी उम्मीद है कि शायद आगे उनका जो चरित्र है उसमें कुछ सुधार आ गया होगा और कुछ अपने समाज की सेवा करेंगे। आज आपको इसके बारे में मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। आज आप दोबारा दादा बने हैं, बड़ा दिल है आपका। बहुत खुशी हो रही है आपको। You've just had twin grandsons. You're certainly feeling very generously towards the number of families mentioned. But I've always felt that there's no use remembering faults. Ultimately, you have to remember the good points and try to work on them. Right. But this Global Sindhi Council, when does it get into operation? शुरू कब होगा? आज अनाउंस हो रहा है, आज के बाद से ये शुरू हो जाएगा। इसकी फॉर्मेलिटीज जो रजिस्ट्रेशन की थी वो सब पूरी हो चुकी है, एक ट्रस्ट बन चुकी है और मिस्टर जेठमलानी साहब उसके मैनेजिंग ट्रस्टी है। अब से ये काम शुरू करेंगे। देखिए काफी प्रॉब्लम्स है सिंधी, एक्सेप्ट दैट आई डोंट ऑपरेट ऑन द बैंक अकाउंट। तो काफी प्रॉब्लम्स है सिंधी कम्युनिटी के। The first thing we really want to do is to build in Delhi एक सिंधी भवन or Sindhu Bhavan you might call it, where Sindhis from abroad, whenever they come, they can meet, they can have their functions. We are trying to acquire some land, I hope at a concessional price from the government. Hopefully. And we will really build Sindhu Bhavan like the one they have built in Ahmedabad. It's a great, great structure that they have brought up in Ahmedabad. So I think we'll be able to surpass that in Delhi. 26 जनवरी आ रही है अभी। हम चाहेंगे कि 26 जनवरी को हमारी सिंधियों की सभ्यता के ऊपर एक झांकी जैसे बाकी स्टेट्स के निकल रही है, क्योंकि हम बदकिस्मती है, हमारे पास अपनी स्टेट नहीं है, मगर वो हमारी सभ्यता को तो सामने लाना चाहिए। तो वो ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हो जाना चाहिए। क्या बात है सर। That would be something. I mean, if that really happened, that'll be a first, isn't it? And isn't it sad after 1947? I mean, from 1950 the Republic Day Parade started, 1950 के बाद आज 56 बरस हो गए। 56 बरस में आज तक कभी सिंधियों की झांकी नहीं निकली रिपब्लिक डे में। But that will not be merely of Sindhis. It will represent Sindhi civilization, which means the Indus civilization. Right from the Indus Valley civilization up to today. मोहन के धड़ों की सभ्यता बताई जाती है। The most ancient आजकल जो पाकिस्तान में लिटरेचर निकल रही है इसी सिविलाइजेशन पे, उसका कोई हद नहीं, और हम उसको ये मानते हैं कि सिंध ने हमको हिंद दिया, सिंध से सभ्यता आई, मगर उसके लिए बाकी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। सिंध से हिंद बना और उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल सिंधी काउंसिल will play the role that all other Sindhi organizations have failed in playing up till now. Thank you for saying that, and I hope my comrades will really make it good. Absolutely wonderful, really and truly wonderful that we can actually do that. Now, coming back again to, since you are here, last time I had asked you कि जब आप कानून मंत्री थे तब आपने काफी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। आज की तारीख में आप क्या देखना चाहेंगे? जो कुछ भी आपने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। You were blocked in the cabinet, you were blocked within your own party. कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, बदतर हुई है हालत। और मैं जुडिशरी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, उनकी इज्जत कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल जुडिशरी में भी करप्शन जितना हो गया है उसका कोई अंदाज नहीं, और इंसाफ बिक रहा है सिर्फ पुलिस स्टेशन पे नहीं मगर हमारे अदालतों में। और जज कितना भी ईमानदार हो, अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं रही तो वो भी बेइंसाफी, अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई है और जज बेईमान हो तभी भी बेइंसाफी। अगर ये दोनों ही बेईमान हैं तो फिर तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। और आज ये हमारे सामने ट्रेजेडी है देश के। बहुत कुछ करना है, रिक्रूटमेंट ऑफ द जुडिशरी, अबाउट देयर क्वालिफिकेशंस, एंड more than that about their emoluments. You cannot keep judges in poverty, and the humblest judge according to me should receive a salary which should be almost the same as the salary of a high court judge. Because why should there be it? The citizen comes in contact with the magistrate, not with the high court. That's right. Absolutely. So if justice fails there, the high court can do nothing.
Very little, anyway. So, lot of reform is required. This is something which we've been talking about now for years and years and years. That as far as the judges are concerned, even at the lower order, they have to receive good enough emoluments so that there can be no question of any corruption anywhere. But that also is not a final solution. I agree with you. Final solution it is a step. But at least it removes temptation. And if there is a reasonable character, then with good financial means, you can live a life of simple honesty. With these present state of affairs, it's impossible. Impossible. Jethmalani Sahab, you had also represented Sanjay Dutt for a short while. Yes, I did. In the beginning. I did for his bail application in the beginning, before the... Now, at the moment, what has happened is there are two things which have happened as far as the bomb blast trial is concerned. 1993 का जो बम ब्लास्ट ट्रायल है उसमें सिर्फ दो चीजें हुई हैं, या दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पर नहीं है, या संजय दत्त की बात हो रही है. अभी मेरी जबान बंद है, मेरी जबान पे ताला है, मैं संजय के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ. I mean, he must be a worried person. Hopefully, we wish him all the best. Hopefully, he should come out of this. Yes, hopefully. You wish him the best. And then there's always a Supreme Court. Yes, there is the Supreme Court, but the trial court is more important. But ultimately, Supreme Court doesn't interfere with finding of fact. And ultimately, justice depends on facts. There's not much law involved in every case. Little bit of law is always involved, and clever lawyers can always bring in law, but ultimately it is facts of which justice is made. That's the stuff of justice. So I hope he gets away here, but I don't know how the case has gone on really, because I had nothing to do with the trial. Jethmalani Sahab, I'll take you to one other area which has been of great interest to you, since we really are running out of time. But I still remember at the time when the Punjab agitation, when there was a problem in Punjab, it was at its peak, you were one of the few people who actually travelled all over the state. आप हर एक से मिले, so called terrorists जो थे उनसे भी मिले, सबसे मिले. आज की तारीख में कश्मीर में जो चल रहा है, उसके बारे में आप अपनी थॉट जरा बताएं हमें. मैं तो समझता हूं कि कश्मीर प्रॉब्लम इज नाउ अ वेरी इजी प्रॉब्लम, ओनली दैट देयर इज नो विल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगर ये मुशर्रफ निकल गया और कोई फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट ताकत में आई पाकिस्तान में, तो ये कश्मीर प्रॉब्लम 50 बरस तक सॉल्व नहीं होगा. फिर हम झगड़ते रहेंगे आपस में. स्टेट्समैनशिप रिक्वायर्स कि at all costs this problem must be resolved now while Musharraf is still in power. I mean, Musharraf is not a perfect ruler of Pakistan, nor is he a perfect enemy so far as we are concerned. But he is the best that we have at the moment. And mind you, whatever people might say about President Bush, but India has never had a better friend than President Bush. And if he is around and we use him properly, the Kashmir problem can be solved like this. What would the solution be? Look, Musharraf has made one big concession. No plebiscite, doesn't want change of borders. By process of elimination, what does it mean? It means that both sides will not treat the Kashmiris as colonial subjects. In other words, not exploit them. We are not exploiting the Kashmiris. I can swear on the behalf of my government. Musharraf will have to make some big sacrifice. Make him run. And ultimately, the best solution will be that there should be an informal council consisting of both representatives of India and Pakistan, whose mandate should be that see that the Kashmiris are not exploited like colonial subjects. Right, I think we'll have to end it right over there. The Global Sindhi Council, of course, is being formed. Managing trustee is, of course, Mr. Ram Jethmalani, and we must congratulate Mr. Ram Jethmalani again on being the proud grandfather of twins who have been born to Mahesh and Hasina Jethmalani today. Once again, congratulations, sir. Thank you. And congratulations to you, Mr. Jawhrani. You are the proud father of the Global Sindhi Council. Thank you so much. Right.